तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्छ। यू कान्ट बी सिरियस। यू कान्ट बी सिरियस। तपाईँ यो किताब पढ्नु सक्नुहुन्छ। यू क्यान रिड दिस बुक। यू क्यान रिड दिस बुक। तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यू क्यान पुट इट एनीवेयर। यू क्यान पुट इट एनीवेयर। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ। यू क्यान गो इफ यू वान्ट टु। यू क्यान गो इफ यू वान्ट टु। तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ। यू क्यान गो होम नाउ। यू क्यान गो होम नाउ। तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ। यू क्यान गो एनीवेयर यू वान्ट। यू क्यान गो एनीवेयर यू वान्ट। तपाईँ जोनलाई मद्दत लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। यू क्यान आस्क जोन फर हेल्प। यू क्यान आस्क जोन फर हेल्प। तिमीले नियम तोड्यो। यू ब्रोक द रुल्स। यू ब्रोक द रुल्स। तिमी धेरै बहादुर छौ। यू आर भेरी ब्रेभ। यू आर भेरी ब्रेभ। तिमी धेरै राम्रो छौ। यू आर भेरी ब्युटिफुल। यू आर भेरी ब्युटिफुल। तिमी भारतीय होइन। यू आर नॉट इंडियन। यू आर नॉट इंडियन। तिमी मेरो जिम्मेवारी हो। यू आर माई रिस्पोन्सिबिलिटी। यू आर माई रिस्पोन्सिबिलिटी। तपाईँ ढिलो हुनुभयो। यू आर लेट। यू आर लेट। तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ। यू आर ऑलवेज कम्प्लेनिङ। यू आर ऑलवेज कम्प्लेनिङ। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ। यू आर अ टिचर। यू आर अ टिचर। तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। यू आर अ गुड टीचर। यू आर अ गुड टीचर। डेड सेंटेंसेस इन नेपाली एंड इंग्लिश। उनी बस बटा आइके थिए कि रेल बाटा। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। के उनी जॉनलाई भेट्न गइन्। डिड शी गॉट टू सी जॉन। डिड शी गॉट टू सी जॉन। के उसले तिमीलाई प्रस्ताव गर्यो। डिड ही प्रपोज टू यू। डिड ही प्रपोज टू यू। के उसले तपाईँलाई यसको बारेमा केही भन्यो। डिड ही से एनीथिङ अबाउट इट टू यू। डिड ही से एनीथिङ अबाउट इट टू यू। के उसले यसको बारेमा केही भन्यो। डिड ही से एनीथिङ अबाउट इट। डिड ही से एनीथिङ अबाउट इट। के उसले तपाईँलाई के गर्ने भन्यो। डिड ही टेल यू व्हाट टू डू। डिड ही टेल यू व्हाट टू डू। के मैले उसको भावनालाई चोट पुर्याएको छु। डिड आई हर्ट हिज फिलिङ। डिड आई हर्ट हिज फिलिङ। के तिमीले उसलाई हिजो कल गरेको थियो। डिड यू कॉल हिम अप यस्टरडे। डिड यू कॉल हिम अप यस्टरडे। के तपाईँ आफैलाई यो गर्नुभयो। डिड यू डू दिस ऑन योर ओन। डिड यू डू दिस ऑन योर ओन। के तपाईँले आफ्नो गृहकार्य गर्नुभयो। डिड यू डू योर होमवर्क। डिड यू डू योर होमवर्क। के तपाईँले हिजो राति उसलाई घर चलाउनुभयो। डिड यू ड्राइभ हर होम लास्ट नाइट। डिड यू ड्राइभ हर होम लास्ट नाइट। के तपाईँले काम पुरा गर्नुभयो। डिड यू फिनिश द जॉब। डिड यू फिनिश द जॉब। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो। डिड यू गेट माई पोइन्ट। डिड यू गेट माई पोइन्ट। के तपाईँको जॉनसँग झगडा भयो। डिड यू हैव अ फाइट विथ जॉन। डिड यू हैव अ फाइट विथ जॉन। तिमी लड्छौ। डिड यू फाइट। डिड यू फाइट। उनी बसबाट आएका थिए कि रेलबाट। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। के उनी जॉनलाई भेट्न गइन्। डिड शी गो टू सी जॉन। डिड शी गो टू सी जॉन। के उसले तिमीलाई प्रस्ताव गर्यो। डिड ही प्रपोज टू यू। डिड ही प्रपोज टू यू।
के उसले तपाईँलाई यसको बारेमा केही भन्यो? Did he say anything about it to you? Did he say anything about it to you? के उसले यसको बारेमा केही भन्यो? Did he say anything about it? Did he say anything about it? के उसले तपाईँलाई के गर्नुभयो? Did he tell you what to do? Did he tell you what to do? के मैले उसको भावनालाई चोट पुर्याएको छु? Did I hurt his feeling? Did I hurt his feeling? के तिमीले उसलाई हिजो कल गरेको थियो? Did you call him up yesterday? Did you call him up yesterday? के तपाईँ आफूलाई यो गर्नुभयो? Did you do this on your own? Did you do this on your own? के तपाईँले आफ्नो गृहकार्य गर्नुभयो? Did you do your homework? Did you do your homework? के तपाईँले हिजो राति उसलाई घर चलाउनु भयो? Did you drive her home last night? Did you drive her home last night? के तपाईँले काम पूरा गर्नुभयो? Did you finish the job? Did you finish the job? तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? Did you get my point? Did you get my point? के तपाईँको जॉनसँग झगडा भयो? Did you have a fight with John? Did you have a fight with John? तिमी लड्छौ? Did you fight? Did you fight? के तपाईँलाई राम्रो निद्रा लाग्यो? Did you have a good sleep? Did you have a good sleep? के तपाईँसँग राम्रो गर्मी छ? Did you have a nice summer? Did you have a nice summer? के तपाईँले उसलाई निम्तो दिनुभयो? Did you invite him? Did you invite him? के तपाईँलाई चलचित्र मन पर्यो? Did you like the movie? Did you like the movie? के तपाईँ यहाँ बस्नुभयो? Did you live here? Did you live here? के तपाईँ आफूलाई बनाउनुभयो? Did you make it by yourself? Did you make it by yourself? के तिमीले मलाई मिस गर्यो? Did you miss me? Did you miss me? तपाईँले त्यहाँ कसलाई देख्नुभयो? Did you see anybody there? Did you see anybody there? के तिमीले नि बोल्यो? Did you speak at all? Did you speak at all? के तिमी आफूलाई अध्ययन गर्यो? Did you study by yourself? Did you study by yourself? तपाईँले नुहाउनुभयो? Did you take a bath? Did you take a bath? के तपाईँले खेल हेर्नुभयो? Did you watch the game? Did you watch the game? तपाईँले फरक देख्नुहुनेछ. You will see the difference. You will see the difference. तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ? You will make a good wife. You will make a good wife. तिमी सुत्नु पर्छ. You should sleep. You should sleep. तपाईँले कडा अध्ययन गर्नु पर्छ. You must study hard. You must study hard. तिमी जानु पर्छ. You must go. You must go. तपाईँले हाँसो गरेको हुने पर्छ. You must be kidding. You must be kidding. तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ. You may take the book. You may take the book. तपाईँ यो किताब पढ्नु सक्नुहुन्छ. You may read this book. You may read this book. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जानु सक्नुहुन्छ. You may go home if you want to. You may go home if you want to. तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ. You may go. You may go. तपाईँले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ. You make me happy. You make me happy. तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ. You love me so much.
You love me so much. तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ? You love me or not. You love me or not. तिमी मलाई माया गर्छौ. You love me. You love me. तिमी व्यस्त देखिन्छौ. You look busy. You look busy. तिमी मलाई मन पराउँछौ. You like me. You like me. तिमीलाई मन पर्यो. You like it. You like it. तिमीले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ. You have to study hard. You have to study hard. तिमी मसँग आउनुपर्छ. You have to come with me. You have to come with me. तपाईसँग प्रशस्त समय थियो. You had plenty of time. You had plenty of time. तिमीले मलाई बुझ्दैनौ. You don't understand me. You don't understand me. तिमी अंग्रेजी बुझ्दैनौ. You don't understand English. You don't understand English. तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन. You don't have to talk so loud. You don't have to talk so loud. तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन. You don't have to get up so early. You don't have to get up so early. तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्छ. You can't be serious. You can't be serious. तपाईँ यो किताब पढ्नु सक्नुहुन्छ. You can read this book. You can read this book. तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ. You can put it anywhere. You can put it anywhere. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ. You can go if you want to. You can go if you want to. तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ. You can go home now. You can go home now. तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ. You can go anywhere you want. You can go anywhere you want. तपाईँ जोनलाई मद्दत लागि सोध्न सक्नुहुन्छ. You can ask John for help. You can ask John for help. तिमीले नियम तोड्यो. You broke the rules. You broke the rules. तिमी धेरै बहादुर छौ. You are very brave. You are very brave. तिमी धेरै राम्रो छौ. You are very beautiful. You are very beautiful. तिमी भारतीय होइन. You are not Indian. You are not Indian. तिमी मेरो जिम्मेवारी हो. You are my responsibility. You are my responsibility. तपाईँ ढिलो हुनुभयो. You are late. You are late. तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ. You are always complaining. You are always complaining. तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ. You are a teacher. You are a teacher. तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ. You are a good teacher. You are a good teacher. Did sentences in Nepali and English. उनी बस बटा आइके थिए कि रेल बाटा. Did he come by bus or by train? Did he come by bus or by train? के उनी जॉनलाई भेट्न गइन्. Did she got to see John? Did she got to see John? के उसले तिमीलाई प्रस्ताव गरियो. Did he propose to you? Did he propose to you? के उसले तपाईँलाई यसको बारेमा केही भन्यो. Did he say anything about it to you? Did he say anything about it to you? के उसले यसको बारेमा केही भन्यो. Did he say anything about it? Did he say anything about it? के उसले तपाईँलाई के गर्ने भन्यो. Did he tell you what to do? Did he tell you what to do?
के मैले उसको भावनालाई चोट पर्याएको छु। डिड आई हर्ट हिज फिलिङ, डिड आई हर्ट हिज फिलिङ। के तिमीले उसलाई हिजो कल गरेको थियो। डिड यु कॉल हिम अप यस्टरडे, डिड यु कॉल हिम अप यस्टरडे। के तपाईँ आफैलाई यो गर्नुभयो। डिड यु डू दिस ऑन योर ओन, डिड यु डू दिस ऑन योर ओन। के तपाईँले आफ्नो गृहकार्य गर्नुभयो। डिड यु डू योर होमवर्क, डिड यु डू योर होमवर्क। के तपाईँले हिजो राति उसलाई घर चलाउनुभयो। डिड यु ड्राइभ हर होम लास्ट नाइट, डिड यु ड्राइभ हर होम लास्ट नाइट। के तपाईँले काम पुरा गर्नुभयो। डिड यु फिनिश द जॉब, डिड यु फिनिश द जॉब। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो। डिड यु गेट माई पोइन्ट, डिड यु गेट माई पोइन्ट। के तपाईँको जॉनसँग झगडा भयो। डिड यु हैव अ फाइट विथ जॉन, डिड यु हैव अ फाइट विथ जॉन। तिमी लड्छौ। डिड यु फाइट, डिड यु फाइट। उनी बसबाट आएका थिए कि रेलबाट। डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन, डिड ही कम बाय बस और बाय ट्रेन। के उनी जॉनलाई भेट्न गइन्। डिड शी गो टू सी जॉन, डिड सी गो टू सी जॉन। के उसले तिमीलाई प्रस्ताव गर्यो। डिड ही प्रपोज टू यू, डिड ही प्रपोज टू यू। के उसले तपाईँलाई यसको बारेमा केही भन्यो। डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट टू यू, डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट टू यू। के उसले यसको बारेमा केही भन्यो। डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट, डिड ही से एनिथिङ अबाउट इट। के उसले तपाईँलाई के गर्नुभयो। डिड ही टेल यू व्हाट टू डू, डिड ही टेल यू व्हाट टू डू। के मैले उसको भावनालाई चोट पुर्याएको छु। डिड आई हर्ट हिज फिलिङ, डिड आई हर्ट हिज फिलिङ। के तिमीले उसलाई हिजो कल गरेको थियो। डिड यु कॉल हिम अप यस्टरडे, डिड यु कॉल हिम अप यस्टरडे। के तपाईँ आफूलाई यो गर्नुभयो। डिड यु डू दिस ऑन योर ओन, डिड यु डू दिस ऑन योर ओन। के तपाईँले आफ्नो गृहकार्य गर्नुभयो। डिड यु डू योर होमवर्क, डिड यु डू योर होमवर्क। के तपाईँले हिजो राति उसलाई घर चलाउनुभयो। डिड यु ड्राइभ हर होम लास्ट नाइट, डिड यु ड्राइभ हर होम लास्ट नाइट। के तपाईँले काम पुरा गर्नुभयो। डिड यु फिनिश द जॉब, डिड यु फिनिश द जॉब। तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो। डिड यु गेट माई पोइन्ट, डिड यु गेट माई पोइन्ट। के तपाईँको जॉनसँग झगडा भयो। डिड यु हैव अ फाइट विथ जॉन, डिड यु हैव अ फाइट विथ जॉन। तिमी लड्छौ। डिड यु फाइट, डिड यु फाइट। के तपाईँलाई राम्रो निद्रा लाग्यो। डिड यु हैव अ गुड स्लीप, डिड यु हैव अ गुड स्लीप। के तपाईँसँग राम्रो गर्मी छ। डिड यु हैव अ नाइस समर, डिड यु हैव अ नाइस समर। के तपाईँले उसलाई निम्तो दिनुभयो। डिड यु इन्भाइट हिम, डिड यु इन्भाइट हिम। के तपाईँलाई चलचित्र मन पर्यो। डिड यु लाइक द मूवी, डिड यु लाइक द मूवी। के तपाईँ यहाँ बस्नुभयो। डिड यु लिभ हेयर, डिड यु लिभ हेयर। के तपाईँ आफूलाई बनाउनुभयो। डिड यु मेक इट बाई योरसेल्फ, डिड यु मेक इट बाई योरसेल्फ। के तिमीले मलाई मिस गर्यो। डिड यु मिस मी, डिड यु मिस मी। तपाईँले त्यहाँ कसलाई देख्नुभयो। डिड यु सी एनीबडी देयर, डिड यु सी एनीबडी देयर। के तिमीले नि बोल्यो। डिड यु स्पीक एट ऑल, डिड यु स्पीक एट ऑल। के तिमी आफूलाई अध्ययन गर्यो। डिड यु स्टडी बाई योरसेल्फ, डिड यु स्टडी बाई योरसेल्फ। तपाईँले नुहाउनुभयो। डिड यु टेक अ बाथ, डिड यु टेक अ बाथ। के तपाईँले खेल हेर्नुभयो।
Did you watch the game? Did you watch the game? तपाईले फरक देख्नु हुनेछ. You will see the difference. You will see the difference. तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ. You will make a good wife. You will make a good wife. तिमी सुत्नु पर्छ. You should sleep. You should sleep. तपाईले कडा अध्ययन गर्नु पर्छ. You must study hard. You must study hard. तिमी जानु पर्छ. You must go. You must go. तपाईले हाँसो गरेको हुने पर्छ. You must be kidding. You must be kidding. तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ. You may take the book. You may take the book. तपाईँ यो किताब पढ्नु सक्नुहुन्छ. You may read this book. You may read this book. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जानु सक्नुहुन्छ. You may go home if you want to. You may go home if you want to. तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ. You may go. You may go. तपाईले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ. You make me happy. You make me happy. तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ. You love me so much. You love me so much. तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ. You love me or not. You love me or not. तिमी मलाई माया गर्छौ. You love me. You love me. तिमी व्यस्त देखिन्छौ. You look busy. You look busy. तिमी मलाई मन पराउँछौ. You like me. You like me. तिमीलाई मन पर्यो. You like it. You like it. तिमीले कडा अध्ययन गर्नु पर्छ. You have to study hard. You have to study hard. तिमी मसँग आउनु पर्छ. You have to come with me. You have to come with me. तपाईसँग प्रशस्त समय थियो. You had plenty of time. You had plenty of time. तिमीले मलाई बुझ्दैनौ. You don't understand me. You don't understand me. तिमी अंग्रेजी बुझ्दैनौ. You don't understand English. You don't understand English. तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन. You don't have to talk so loud. You don't have to talk so loud. तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन. You don't have to get up so early. You don't have to get up so early.